Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching a Mohak Mongol video about Gen Z show-off culture in India. I've had a few people ask me to react on this topic with a couple different videos, but we're going to go and watch this video in particular because it seemed really interesting. It really piqued my interest. Now, we do have Gen Z show-off culture here in the States as well. It's not just Gen Z. It is also like a millennial thing and a Gen X thing and a boomer thing as well. There's show off culture is rampant amongst the generations here, but I will say that Gen Z does tend to have a lot more show off culture as well. Gen Alpha as well. It's weird. It's really weird. Now I myself am very anti show off. Like, I don't see the need or necessity to have a piece of, just to have something to show off to somebody I'll never talk to, right? Like, walking down the road, like, I need to flash my bling to them, flash like a necklace or flash like a $500,000 watch. I don't need that. That just seems like kind of like asinine and kind of like silly and redundant and unnecessary. But it's like, I don't know. There's sometimes it's just these people are crazy. Now, in this video in itself, he's going to talk about like iPhones. That's one of the reasons why people ask me to react to it, is specifically bring up the iPhone topic. Because from what I understand, iPhones are insanely expensive in India, right? Or is it the other way around? Are iPhones cheaper in India? And Samsung? No, Android's cheaper in India, but iPhones are really expensive, right? But people always go for iPhones because they see iPhones as like a status symbol, something to be coveted and to show off that you have the latest and greatest iPhone until, of course, the next year where the company makes another newer, better iPhone that, oh no, you don't have the latest and greatest anymore. What are you going to do? You gotta buy the newest and greatest every year. Oh, geez, you wouldn't want to look bad to the random people that you won't see. you can kind of tell that I'm very I'm not against consumerism. I'm against consumerism to a point, right? Like, things should be used for a long time. You should try to get out as much potential out of the things you buy, right, as you possibly can. So like me myself, I'm rocking, the same PC I bought 7 years ago. I'm rocking this Mac Mini I got, I don't know, like 3 or 4 years ago. My phone recently just died and I had to get a new phone. I had a Google Pixel 3 XL. At this time, it was like a 6-year phone. Now I got a Google Pixel 6 Pro, which is, I think a 2 or 3-year-old phone. I've had iPhones in the past. I've actually worked for Apple. I don't know, man. It's just, I don't know. We're going to watch the video and we're going to see from an Indian perspective on what is going on. And I guess we're just doing a reaction video to it. If you want to see this video, the link to this video will be in the description down below, so make sure to go and check them out. And yeah, let's get into it. पिछले महीने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक I've माँ seen this video. This like the context behind this is pretty sad. और बेटे का वीडियो वायरल हुआ। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं और बेटा किस चीज की मांग कर रहा है? Yeah. आईफोन की। He didn't eat until his mom would. He basically went on a hunger strike in order for his mom to buy him an iPhone. फाइनली दुखी हारी माँ मान जाती है और किसी तरह पैसे जोड़ती हैं एक आईफोन खरीदने के लिए। माँ की शक्ल से ही आप देख सकते Wow. Wow. हो कि इस बारे में वो सोचती क्या है। और ये हमारे देश में कोई अकेला लड़का नहीं है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भूख है आईफोन की। People have told me that there are people that buy iPhones on like years and years long loan. It's crazy. Look at his face, not the face, but the hand. What? It's worth 1 lakh. Oh, because he has an iPhone? See, like, why does that matter? Who cares?
Who cares? You have like an iPhone that's not even like the Pro model. That's the base model iPhone. लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है. iPhone 12 Pro, wow. And you know what? That iPhone 12 Pro is worth now? Hardly anything. एंड्रॉइड के कैमरे को To compete with your Android camera, our Apple iPhone 6 is enough? Do they even know what they're talking about? Does he even know? Like that? Oh my God! It's like the console war. It's just. I know we're 43 seconds in, but I feel like I got to talk about this. When it comes to cameras and phones, like, I don't know. People think Androids are shit, right? They just straight up, like, we'll say it how it is. People think Androids are shit. They're not. They're not. Androids typically have a lot more variety. They have a lot lower on the lower end, a lot higher on the higher end than you can get out of an iPhone. iPhones, listen, as somebody that's worked for Apple, I've worked for Apple. I've had iPhones. I've had like the newest model iPhones. I will say, from my firsthand experience, you can get a better camera on an Android. That's not to say that the iPhone camera isn't bad. The iPhone camera is great. You know what? Most of these higher end phones, the photo quality is all going to look the same. I don't know. This is just an asinine, another asinine comment. Anyways, continue the video. I'm just rambling at this point. कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है. मैं तो पूंजी. पिछले साल 90 लाख आईफोन्स बिके हमारे देश में और 60% टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से, जो एक क्लियर साइन है कि हमारे देश में अब आईफोन इतना बड़ा स्टेटस सिंबल है. और ये चीज मैं तब तक नहीं समझा था जब तक मैंने 13 लोगों से बात नहीं करी जिन्होंने रिसेंटली एक आईफोन लिया है. एंड मैन, जो चीज उन्होंने मुझे बताई, it was quite shocking. गर्ल्स का जो अटेंशन है वो भी बहुत मिला. I got a lot of attention from girls. That's a lie. That's like cope. He's huffing the major copium with that one. That is 100% cope. DMs आने लगे. And as an introvert, to be like कि थोड़ा participate करना है किसी के साथ या किसी के साथ बात करने जाना है. If you have an iPhone, approach करना, it's self-confidence. Self-confidence to have an iPhone? What do you mean? What? This is AI generated, by the way. That's funny. Self-confidence to have an iPhone? देता है. I feel like, approaching cool people is easier. Cool people? Okay. अपने आप को खुश करने के लिए पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारा पैसे तुम कैसे भी खर्च करो. I just need to say this. When it comes to like progression, when it comes to Apple and their company, Apple tends to lack. It has been so rough because I shouldn't say anything. Okay, hold on. I gotta remember what I was. Okay, I shouldn't go so much to slander a former employer. But I will say, as a consumer, looking at it from a consumer point of view, iPhone tends to be a lot more closed off in its potential compared to Android phones. And I know this video is not about specifically iPhone versus Android. We're going to get into it, I'm sure. This video isn't Android versus iPhone. It's that show-off culture. And I guess people just assume because it's more expensive, it's got to be better. I guess that's what my guess is. प्रॉब्लम तब आती है जब आमदनी इतनी है पर खर्च इतने. और ये शो ऑफ कल्चर बस आईफोन के बारे में नहीं है. कोल्डप्ले की टिकट्स हो, ट्रैवल डेस्टिनेशंस हो या फिर स्नीकर्स हो. I never understood the sneaker thing. I never understood. The sneaker thing's big over here as well. I never understood the sneaker thing. एक चीज इस शो ऑफ कल्चर को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है और वो है आईफोन. और इस शो ऑफ कल्चर को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उन लोगों से पूछो जिन्होंने रिसेंटली अभी आईफोन खरीदा है.
अब देखो कि लेटेस्ट आईफोन या फिर स्नीकर्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी it's an इन्वेस्ट ad. करना ठीक होता है, लेकिन इमेजिन करो कि 4 महीने आप We अपने let आप the में ads इन्वेस्ट play. करो, जिसका मतलब है कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड नहीं होना होगा, बल्कि आप अपनी एस्पिरेशंस पूरी कर सकते हो अपने स्किल्स से। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो कि ऐसी इंडस्ट्री में जिसकी आज डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग। 2024 में डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स है प्राइवेट सेक्टर। How do you be a और digital माइका का marketer? ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम या अपग्रेड एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंडस्ट्री रेडी बना सकता है 4 महीने में। और अगर आपका सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में पहले से ही इंटरेस्ट है तो और भी बढ़िया है। इस प्रोग्राम के 80 प्लस बैचेस हो गए या 15,000 से ज्यादा लर्नर्स हैं, जिनमें से कई लोग How do I be a digital marketer? जैसी टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। यहाँ आपको फाल्गुनी और सिद्धार्थ जैसे माइका के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ साथ What does it even mean, digital marketer? जैसी कंपनीज के सीनियर मार्केटिंग लीडर से भी डायरेक्टली सीखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम में बस थ्योरी नहीं है, बल्कि आपको रियल पैसों से गूगल और मेटा के एड You चलाने have to run ads for Google and Meta with real money. What? होंगे। और प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है, हर मंथ के 6,458 रुपीज़ 12 मंथ नो कॉस्ट EMI पर। तो अगर नो कॉस्ट EMI यूज़ करनी है तो इधर करो, तो अपने आप में इन्वेस्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर इस लिंक से आप एनरोल करोगे तो आपको 5,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब आते हैं वीडियो पर वापस। Camera plus status symbol is the main reason for buying. Camera plus status symbol is the main reason for buying it. But the thing is, the iPhone doesn't even have the best camera in the market. Typically, when it comes to good cameras, you get a better camera with like a Samsung or like what I have, the Google Pixel. Actually, I think the Google Pixel has the best camera on the market. Now, am I biased because I'm currently rocking a Pixel? Yeah, sure, but I don't have the latest Pixel. I don't know. 12th तक इतना कुछ नहीं था फोन का। 12th तक मेरे पास खुद का फोन भी नहीं था, बट कॉलेज में आके आई हैव सीन, ओ माय गॉड, इन इवेंट्स और मे बी इन पार्टीज आल्सो, मैंने ये देखा है कि जब भी कोई मोमेंट कैप्चर करना होता था तो सबसे बेस्ट फोन ही यूज होता था। तो अब जिसके पास वो फोन है, ओ माय गॉड, दैट पर्सन इज द किंग देयर। I guess this is just like a different mindset from okay, so I'm trying to think, like I'm trying to go back to when smartphones first came out here in the US, when iPhone first came out, when the very first iPhone came out. I had the very first iPhone when it released. I don't ever remember being thought of as like a king or anything like that. I don't know, that's strange. That's very strange. ये एक 21 साल की स्टूडेंट है दिल्ली में, पर ये अकेली नहीं है। कई लोगों ने ऐसे बात करी हमसे कि मानो आईफोन एक फोन नहीं है, बल्कि एक जादुई चीज है जो उनकी A जिंदगी magical thing that can change their lives. Yeah, it feels like they're putting this like weird, I don't know, they're putting it up on a pedestal like as a solution for other problems. That's what it feels like. बदल सकती है। ओवरऑल मैंने 3 तरीके के लोगों से बात करी। पहले वो जो कहते कि यार ट्राई करते ना आईफोन, मैं कितने सालों से एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, अब मेरा फोन बेकार हो गया है तो एक नया फोन लेना ही है, तो देखते कि आईफोन भला क्या चीज है। So before this, I have used about 2 to 3 Androids. I've never used an iOS. Now that I'm using it, it's a smooth phone to operate. The reason it's a smooth phone to operate is because Apple tends to make it for like the elderly. They try to make it as simple as possible. Display is phenomenal. The cameras work really well. And I keep The display's alright. I like the display on the iPhone. I will admit to that. The display on the iPhone is really nice. है बिजनेस स्टैंडर्ड में, और अजिंक्य कहते हैं कि यार जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया फोन चाहिए तो आईफोन लेते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने आईफोन लिया है फंक्शनैलिटी के लिए, जैसे एप्पल का इकोसिस्टम। Yeah, the Apple ecosystem. I mean, most things have an ecosystem now, and it's not even really like the Apple ecosystem, because you can do a lot of things with an Android phone with Apple as well. I don't know. Like, I have a HomePod. I have an iPad. I have my Mac. I had an iPhone, but I don't have an iPhone anymore. I've switched over to Google, to Android. You know, in the past when I had all the Apple stuff, had the Apple Watch, all that, like it was fine, but it's like it didn't make anything better. कि पहली एप्पल परचेस आईफोन ही था,
बल्कि लैपटॉप था। Laptop, तो yeah. उन्होंने सोचा लैपटॉप यूज कर ही लिया है, अब फोन भी ट्राई करते हैं। Currently, I have iPhone. My first Apple product was MacBook. With the MacBook, I had Android, but with iPhone, it was more over adding to ecosystem. It was easy. I have a MacBook. I have a Apple Watch. I have HomePod, AirPods. I'm using Apple Music. So everything is in ecosystem. पर सबसे पॉपुलर फंक्शनैलिटी है फोटोज। उनको लगता है कि आईफोन की फोटो लेने के बाद यार क्या लगूंगा। Of course, because of its camera. I'm a girl. I love to click selfies. I like to click pictures of myself. क्योंकि मुझे सबने Interesting. recommend करा कि newlywed है, you have memories to capture, movements to share, तो you आपको ले लेना Again, चाहिए। I've already talked about the camera. I do think that you can find a better camera on other devices rather than an iPhone. And really, to be honest with you, most of these cameras all run off the same sensor anyways. So it comes down to like the actual software behind the camera. If you're looking for like raw, if you're taking raw photos, there are going to be better means, better cameras with a better, like a bigger sensor. Because I want to say the iPhone's still rocking like the same sensor for like the past like half a decade. I'm pretty positive. Let me actually look that up. Although Apple doesn't usually talk about it, who makes its components. CEO Tim Cook said in 2022 that Sony had been its iPhone camera supplier for more than 10 years. You can buy a Sony phone and it'll have the same sensor. That's funny. Plus, past reports have suggested that Sony sensors were used in the iPhone, like iPhone 6, iPhone 8. Given software processing, Apple's preference for creating the true-to-life images, to quote, yada, yada, yada. The 48 megapixel camera. So yeah, they got a new camera and it's being made by Samsung, I guess. But again, this video isn't about iPhone versus Android. I got to remember that. This video is not iPhone versus Android. It's about consumerism and show-off culture. ये बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, नॉर्मल फोन से क्या करना है। तो आईफोन से फोटो लेने के बाद या तो तुम अच्छे लगोगे या फिर जो तुम्हारी मेमोरीज है ना वो बहुत अच्छी लगेंगी। पर क्या ये सच है कि आईफोन की फोटोज बेटर होती हैं? No. अगर 10 साल पहले ये सवाल पूछा होता तो आंसर यस था, पर अभी कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है इसके बारे में। जैसे MKBHD। Oh yeah, okay, so yeah, MBKHD. He runs a yearly. He literally runs like a yearly photo test competition, like a blind photo test competition. And I want to say for like the majority of the years, it's either like a Samsung or a Google Pixel that actually wins the camera test. पॉपुलर टेक यूट्यूबर्स हर साल ब्लाइंड स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट करता है। वो अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है कि आप वोट करो कि कौन सी फोटो बेस्ट है, पर वो बताता नहीं है कि कौन सी फोटो किस कैमरा से ली गई है। और कई बार आईफोन की फोटो बेस्ट वोटेड फोटो नहीं होती। Yeah, usually iPhones are like middle of the road typically. एक्चुअली पिछले सालों के दौरान कई एंड्रॉइड फोन्स स्पेशली Oh yeah. So hold on, I want to see the winner here. पिछले सालों के दौरान So this year it was the Pixel 7a, the Pixel Fold, so two Google phones, and then the OnePlus Android Open. phones, especially This one's the Pixel 8 Pro, the Samsung Z Fold, and hey, look, iPhone 15 Pro is number 3 on that one. गूगल पिक्सल फोन्स टॉप पर आए। तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग हमारे पास स्पेशली गूगल पिक्सल फोन्स Yeah. टॉप पर आए। तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग हमारे पास कोई सॉलिड डेटा नहीं है प्रूव करने के लिए कि आईफोन की फोटोज बेस्ट होती हैं। तो ये परसेप्शन It's there's that term where you buy something, but you have to like trick your brain into thinking that it's better to justify the cost. What is that term? What is that term? God, I'm so bad when it comes to remembering things. I wish I remember what that term was called. बना कैसे? हो सकता है कि कई लोग लोअर एंड बजट एंड्रॉइड डिवाइसेस से आईफोन तक अपग्रेड कर रहे हैं। Oh yeah, that could be why they see it as such a big deal, is because they're going from like I said here, the budget Androids to an iPhone. Yeah, sure, it's going to be very, very different when you go from a super cheap like Chinese knockoff phone. तो ऑब्वियसली अगर आप 15,000 के फोन से एक 80,000 के फोन तक जाओगे तो कैमरा क्वालिटी तो इंप्रूव होगी, पर ये एक्चुअली मैटर ही नहीं करता कि आईफोन अच्छी फोटोज लेता है या नहीं, क्योंकि परसेप्शन बन गया है। इसके पीछे एक कारण शॉट ऑन आईफोन कैंपेन हो सकता है, और ये परसेप्शन इस हद तक बन गया है कि लोगों को लगता है कि अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है ना बाबू, तो मुझे आईफोन ही लेना पड़ेगा। जैसे ये है आदित्य, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से,
वो एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है जिन्होंने कई एग्जाम्स दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी के लिए भी और मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, पर एग्जाम्स में वो क्लियर नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना पैशन परस्यू करूंगा, Content creator. क्रिएशन का। और रिसेंटली जब मेरे मल्टीपल एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स में ऑलरेडी फेल हो रहा हूँ, नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक, दोबारा कंटेंट क्रिएशन शुरू किया जाए। और कंटेंट की दुनिया में घुसना है तो आईफोन तो ज़रूरी है। इनिशियली आई जस्ट नीडेड अ फोन विद अ गुड कैमरा। यूट्यूब पे आप जाइए और देखिए कि जितने भी आप कैमरा कंपैरिजन देखते हैं उसमें आईफोन कम्स एट द वेरी टॉप। तो आप खुद सोचो कि एप्पल की मार्केटिंग कितनी तगड़ी है कि अब लोगों को लग रहा है कि कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आईफोन यूज ही करना होगा। क्या आपको लगता है कि भुवन बाम ने ऐसे वीडियोस आईफोन से बनाए थे? और देखो कि जब हम फोटोज और वीडियोस लेते हैं ना तो उनकी स्पेशल बात ये होती है कि यूजुअली एक सोशल एक्टिविटी होते हैं, आपके आसपास लोग होते हैं। और आईफोन का मैजिक फोटो लेने के बाद नहीं स्टार्ट होता, बल्कि फोटो लेने के पहले स्टार्ट होता है, जब ये सिलेक्ट किया जाता है कि फोटो लेगा कौन। आईफोन थोड़ा सा सोशल वैलिडेशन तो देता ही है। Social validation. दूसरा कोई फ्लैगशिप फोन। Wow, look how expensive that was. इतना आसानी से पब्लिक में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन इफ यू आर यूजिंग अ आईफोन लेट्स से ऑफ 40,000, तो that logo brings you the social validation. And the crazy thing is कि आदित्य ने बस हमें ये चीज नहीं बताई, कई लोगों ने बताया कि आईफोन लेने के बाद उनके आसपास लोग ही उनको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। अभी मैं जाती हूँ तो नॉर्मल सिर्फ बर्थडे भी होते हैं मान लो, तो फिर सब लोग बोलेंगे अरे इसके फोन से लो अच्छी आती है, इसके फोन से लो अच्छी आती है, तो हाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है। That's crazy. लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है बस एक फोन की वजह से। कई लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स बनाना आसान That's actually wild. I don't think that's a thing over here. That really isn't. Like, I guess that is like a cultural difference, I guess. That's wild. Of the reasons for photos, because the quality photos that iPhone gave, I don't think any other phone that gives such quality photos. So because of the photos, my friends used to be like close to me so that they can click photos on my phone. I think in my phone I have less photos of mine than my friends. Honestly, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि iPhone has such a deep impact on people's psyche. Maybe because I thought this was about show-off culture. We're still talking about iPhones. मैं ignorant हूँ, पर इट्स क्रेजी कि लोगों के सोशल कनेक्शंस में एक फोन की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये हो क्यों रहा है? सोशल स्टेटस की वजह से। ऑल द कूल किड्स एट कॉलेज सबके पास आईफोन था, एंड एज एन इंट्रोवर्ट टू बी लाइक कि थोड़ा पार्टिसिपेट करना है किसी के साथ या किसी के साथ बात करने जाना है, इफ यू हैव एन आईफोन अप्रोच करना। I don't know, man. That's so sad. Like, the only way for you to fit in and have friends is if you buy an iPhone like they do. Like, I don't know. That seems incredibly sad to me. देता है, I feel like, you know, approaching cool people is easier. All these people are going to think I'm not cool because I don't have an iPhone. मेरी रैग ने कहा कि लोग अपने सोशल स्टेटस के बारे में इतनी टेंशन लेते हैं क्योंकि ये एक तरीका है जिससे हम दूसरे लोगों को एक सिग्नल भेज सकते हैं। देखो, अगर आप किसी के बारे में परखना चाहते हो, या तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी जिसमें बहुत समय लग सकता है, पर एक शॉर्टकट है कि बस आप उनको परख लो एक बार। देखो कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, उन्होंने कौन सी ब्रांड के जूते पहने हुए, और ये सब जानने के बाद बिना बात करे उनसे आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि इनका I don't know. Like, me myself, like, I'm fine with wearing just like a regular plain tee, wearing some jeans, wearing some shoes. Like, it doesn't even matter what it needs to be. I don't know. I don't know. और यही चीज अभी I guess I just don't care about what other people think. जैसे हिमांशु कहते हैं कि उनके कई दोस्तों ने आईफोन इसलिए खरीदा है ताकि वो दूसरों को लोगो दिखा सके। A lot of my friends too peer pressure में ले रहे थे आईफोन। Peer pressure. लोगो के लिए चाहिए था and get the iPhone for the logo. We saw a huge rise in mirror selfies flaunting the iPhone logo. And the crazy thing is कि माँ कहती हैं कि लोग ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आईफोन खरीदने के बाद। Really? पता नहीं, iPhone users अपने आप ही attractive लगने लगते हैं। The fact that iPhone users are effortlessly attractive in the class. What? That's some like that's some like weird thing. Class में, I don't know why.
I think it is some psychology or something. Yeah, that's like okay. But iPhone users somehow attractive लगने लग जाते हैं. There's a Wow. psychological reason behind this and it's called the halo effect. क्योंकि iPhone एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, हम iPhone यूजर्स को हाई वेल्थ, स्टाइल और सक्सेस के साथ परसीव करते हैं. But like it's just not even like it's not even the most premium phone you can buy because there are other phones that are higher in cost and higher in premium quality. Like just Samsung, for example, you can get like one of the Samsung Folds, and the Samsung Folds are easily twice the price of an iPhone. They're a lot more premium because they have that cool factor of being able to fold and close and open and stuff. सारी चीजों की वजह से वो लड़का या फिर लड़की ज्यादा अट्रैक्टिव अपीयर I gotta remember, this is not iPhone versus Android. He's just talking about show-off culture. होते हैं. और हेलो इफेक्ट कहता है कि वो लोग जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनको हम इंटेलिजेंट भी मानते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस उनकी पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को डोमिनेट करने लग जाती है. इनफैक्ट कई रिसर्च स्टडीज ने दिखाया है कि ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को इसी वजह से ज्यादा सैलरीज भी दी जाती है क्योंकि हम मानते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट है. तो आईफोन बेसिकली कई लोग के लिए एक शॉर्टकट है अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने का. 2021 की एक स्टडी ने दिखाया कि आईफोन और एप्पल वॉच खरीद के डेटिंग एप्स पर लोग 76% ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं. Wow. और इनफैक्ट एक बंदे ने हमें ये भी बताया कि उसको ज्यादा फीमेल अटेंशन मिलने लग गया आईफोन खरीदने के. I don't believe that. I find that so hard to believe. गर्ल्स का जो अटेंशन है I really I feel like this is 100% cope. I think I get more attention from girls because I have an iPhone. I really think that's cope. वो भी बहुत मिला, डीएम्स आने लगे तो वो भी बहुत सारा हुआ है. और एक ऑरा जैसी फील हो गई. हाँ, ट्यूशन पे जाते थे तो यार आईफोन है, उसने आईफोन खरीद लिया. अब ह्यूमंस के लिए If you're getting DMs from girls, you would think, okay, if the iPhone's working so well for you to get attention from girls, you're getting DMs, you're getting all this attention from these women, right? Why are you not with a woman right now? Why care about getting attention from many women? If you're getting that attention, you should have a woman by now, right? So you wouldn't have to worry or flaunt that you're getting all this attention, right? सोशल स्टेटस कई सदियों से इम्पोर्टेंट रहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशंस में भी जो हायर सोशल स्टेटस के लोग थे वो डिफरेंट तरीके की. See, that's another thing that I don't like. I don't see like any importance to jewelry. Like when it comes to like jewelry, necklaces, diamonds, rings, like that stuff doesn't interest me. I don't see that stuff as making you a better person whatsoever. Maybe this is a me thing. You know what I'm coming to realize? I thought I was going to go into this video to see like what the show-off culture is all about, but I think I'm coming to realize that I am like this anti-social status person. I don't even know what I would call myself. Like I when it comes to like jewelry, don't care. I think it's pointless. I think it's a pointless waste of money. I think it's a pointless endeavor to even wear it, right? I don't know, man. I don't know. I think I'm coming to realize myself that I'm finding out a lot of things about myself. ज्वेलरी पहनते थे और आज का जमाना तो सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ सोशल स्टेटस हमारी फोटोज और वीडियो से कम्युनिकेट होता है. इस वजह से आपकी फोटो की क्वालिटी और कौन सा फोन है आपके हाथ में वो बहुत मैटर करता है. हमारी जनरेशन कैमरा से इतनी ऑब्सेस्ड है क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. मैं किसी भी सोशल मीडिया में नहीं हूँ. मैं आई ओनली यूज व्हाट्सएप बिकॉज ऑफ कॉलेज पर्पसेस. वन डे एक फ्रेंड ने बोला कि तू आईफोन का क्या कर रही है, तू आईफोन के अच्छे फोटोज से तेरा क्या ही हो जाएगा, तू तो कहीं पोस्ट करेगी नहीं. Okay, that's weird because an iPhone's still a phone, right? It still functions as a phone. तो क्यों? तो आई वाज थिंकिंग कि आईफोन इज इक्वल टू सोशल मीडिया. iPhone is equal to social media. Interesting. अच्छी फोटोज खींचो, वहां पे डालो. एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो लोग जो आईफोन खरीदने जाते हैं ना उनको लगता है कि उनकी डिजायर है आईफोन खरीदना. उनकी अंतरात्मा कह रही है कि आपको आईफोन चाहिए, पर ये सच नहीं है. हमारी डिजायर्स हमारी नहीं होती बल्कि सोसाइटी उसको societal influences and our desires. It's societal influences and really good propaganda by the Apple company. सारे लोग जो सारे दोस्त लोग हैं
वो एप्पल लेके घूम रहे हैं, वो एयर ड्रॉप कर रहे हैं और मैं अपना सैमसंग लेके घूम रहा हूँ। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक पर ये फैसिनेटिंग बुक पढ़ी। मैं आपको I do बताता think हूँ इसमें airdrop's लिखा pretty क्या है। cool. रेन जिरार्ड, एक फ्रेंच Google or फिलोसोफर ने the कहा था Androids do have कि a similar हमारी feature डिजायर्स though. I एक्चुअली just don't know what हमारी it's नहीं called. होती। हम 'Cause I never दूसरे use लोगों it. को देखकर सीखते हैं कि हमारी डिजायर्स होनी क्या चाहिए। ह्यूमन ब्रेन वायर्ड ही ऐसे है कि हम एक दूसरे से कॉपी करें। इसको कहा जाता है मिमेटिक डिजायर। लग्जरी Mimetic प्रोडक्ट desire. बना दिए इसे कि जिसके पास है तो आप किसी फैमिली फंक्शन में जाओ, आपको बोलेंगे फोटोज लेते हैं आप गेट टुगेदर में, तो आप बोलते हो यार उसके पास आईफोन है, उसके फोन से लेते हैं। तो कई लोगों ने देखा कि दूसरे लोग के हाथ में आईफोन है, इसलिए मुझे भी आईफोन की जरूरत है। और जो ये मिमेटिक डिजायर का कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसा ही है। हम अपनी डिजायर दूसरे लोगों से कॉपी It's करते हैं। interesting. उन This लोगों is को really कहा जाता है interesting because models। I don't know if this is like a similar thing here in the US. Like I don't know. I think I'm trying to think. I guess I'm not in like that Gen Z culture, right? I'm not in the Gen Z circle, so I don't know exactly if they're like if they have the same mindset or not. But maybe they do. Maybe they do, and I'm just not in that culture. I'm not in that circle. I don't know. This seems so foreign to me, though. ये मॉडल्स कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त या फिर कोई सेलिब्रिटी। जैसे मोनिका को लोगों ने कहा कि आईफोन बेटर फोटोज लेता है, तो उन्होंने भी सोचा कि उनको आईफोन लेना चाहिए। और जब हम अपनी जिंदगी के मॉडल्स को देखते हैं कि यार उन लोगों की ये डिजायर है, वो डिजायर हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अगर कल विराट कोहली एक फिटनेस वॉच पहनकर घूम रहा है, हमें लगता है कि यार मेरी भी ये डिजायर है, मुझे भी ये फिटनेस वॉच खरीदनी है। Interesting. Again, that's another thing. I think this is more of a video of like introspective on myself. Like I'm learning more and more about myself as I'm watching the videos because I don't. If I see a celebrity attached to a product, that actually makes me want to step away and not purchase that product. Right? I think like a celebrity endorsement of a product is just they're simply there to make money. Into trying to fool people that are so deep into the celebrity worship to buy that product that I become so uninterested in that product. विराट कहते हैं कि ये चीज इतनी पावरफुल होती है मानो कि वो एक ग्रेविटी है। ये मिमेटिक डिजायर्स लगातार हम पर काम कर रही है और हमें रियलाइज भी नहीं होता। ये फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि हम ये न्यूबॉर्न बेबीज में भी देख सकते हैं। एक बच्चे के लिए उसकी माँ मॉडल होती है और जो माँ की डिजायर्स होती है वही डिजायर बेबी की भी होने लग जाती है, जबकि वो बच्चा तो बोल भी नहीं सकता। तो अब इमेजिन करो अडल्ट्स के साथ क्या हो रहा है। अब स्टीव जॉब्स बाबा ने ये मिमेटिक डिजायर तो क्रिएट कर दिया आईफोन के लिए, और इंडियन कंपनीज इन डिजायर्स को फुलफिल कर रही हैं EMI, लोन एप्स और डिस्काउंट सेल्स के जरिए कुछ ना कुछ महीनों के। Whoa, look at that get up. What is this? Flipkart the Big Billion Days. बाद हर साल आपको बिग बिलियन डे या फिर प्राइम डे मिलेगा, जहाँ बड़ी बड़ी सेल्स हो रही है, जहाँ आपको बोला जाता है कि कैसे 1 लाख का Consumerism. All I see from this is consumerism. I guess I'm just not a consumer. फोन बस आपको 70,000 में मिल जाएगा, जिस वजह से आईफोन और अट्रैक्टिव हो जाता है। अब 70,000 का फोन भी आपके बजट के बाहर होगा, पर क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है इसलिए क्यों ना लूं मैं। और EMI की वजह से जब आप Amazon पर जाते हो, आपको 80,000 वाला प्राइस नहीं दिखता, बल्कि आपको दिखाया जाता है कि 6 महीने में आप बस 13,000 That's crazy, dude. That seems so expensive. में आईफोन पा सकते हो। अब 80,000 रुपए सेव करने के लिए तो महीने लग जाएंगे, पर बस 13,000 रुपए से मुझे आईफोन अभी मिल सकता है। अभी का मतलब आज नहीं, अभी का मतलब 10 मिनट में। इससे ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी। तो आप EMI पर जाते हो और फोन खरीद लेते हो। सिंपल जैसी एप्स में तो क्रेडिट लेना भी बहुत आसान कर दिया है 1 क्लिक क्रेडिट के साथ। पर याद रखना कि नथिंग इज फ्री। नो कॉस्ट EMIs में हर बार प्रोसेसिंग फी होती है और 18% GST भी होता है। इनफैक्ट इंडिया के 70% आईफोन्स Wow, 70% of the iPhones are purchased on these loans? EMIs पर खरीदे That's जाते हैं। crazy. और ये मोस्टली वो लोग हैं जिनकी उम्र 15 to 20 years old. Wow. 20 साल की है। ऑन एवरेज इस एज ग्रुप में इंडिया में अर्निंग होती है 33,000 रुपीज पर मंथ, और ये लोग खरीदे हैं 13,000 रुपए का फोन। अब क्रेडिट कार्ड या फिर EMI यूज करने में कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है So, like, literally, people are putting themselves into debt to buy an iPhone. कि आमदनी इतनी है पर खर्चे इतने, और वो भी किस वजह से? मिमेटिक डिजायर्स की वजह से। मैंने थोड़े पैसे भाई से उधार लिए
और दोस्तों से भी कुछ मदद मिली ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक बजट के बाहर फ़ोन लेने वाला था। सो मेरे पास एक बजट था ठीक फ़ोन ख़रीदने के लिए 50-55 हज़ार तक, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब स्टेटस सिंबल्स में अजीब बात ये होती है कि वो तभी काम करते हैं जब एक्सक्लूसिविटी होती है, पर अब ईएमआई की वजह से एक्सक्लूसिविटी है ही नहीं, सबके पास आईफोन है, इसलिए एक नया स्टेटस सिंबल बन गया है कि तुमने आईफोन कैश पे लिया या फिर ईएमआई, क्योंकि ईएमआई वाले लोग तो एवं ही हैं, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि आईफोन ही अब एक्सक्लूसिव नहीं है। अभी मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ तो उसका जो ब्रांड का जो क्रेज था ना, वो भी मुझे लगता है थोड़ी सी तो डाउन हो गया है, क्योंकि अब सभी के पास आईफोन है। अब तो वो एक्सक्लूसिविटी जो था ना आईफोन का, Well, yeah, because it's not an exclusive product. That's the thing. It's like it's not. It's meant to be. These companies want these products in everyone's hand. It's never meant to be an exclusive product. That's crazy to think that, oh yeah, it's an exclusive like premium club. I get the iPhone and I get into the members club. वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा तो कम हो ही गया है। अजिंका का भी यही मानना है। I think with more iPhones around me, that sort of a status symbol as it was maybe 10 years back when it was a wow factor, that I don't see any longer. If I would have seen an iPhone with somebody maybe when I was 16, I would feel ki, wow, this is something phenomenal. यार मुझे ऑनेस्टली लगता है कि जेनजी पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अवेयरनेस और प्रेशर दोनों ही उतना ज़्यादा है। जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था तब मुझे बस कम्पीट करना था शर्मा जी के लड़के के साथ, पर आज जेनजी को सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति के साथ कम्पीट करना है, और अगर लोगों की सेल्फ वर्थ मिरर सेल्फीज से कनेक्टेड है तो उनके लिए तो मुश्किल होगा ही। Okay. Those didn't even look like good selfies. Like, look how blown out the color is. These are terrible selfies. It just looks, they look so bad. Everything looks so washed out. Self-worth, mirror self. Like, look how washed out these photos look. Whoever chose these photos are terrible. You do better. Selfies से connected है तो उनके लिए तो मुश्किल होगा ही। I think the 21-year-olds have, if I were to reverse the word of conformity, peer pressure to look. Oh, this is the CEO of Oyo Rooms, the love hotels of India. The best on social media, to make sure they dress the best, to make sure that they have the best number of posts, to make sure they have the most number of likes. So you would say social pressure. Social pressure. That's probably a better word to it. But I think to avoid it to significant extent is a very critical thing. I wonder what how many likes does my last post have that I posted on a social media platform? Let's take a look. So if we go to my profile, the last post that I posted it was from a day ago, 170 likes, and it is a photo, 169 likes actually. Well, you can't see it. It's a photo of my guinea pig. If I turn down the lighting, you'd be able to see it. Look at that. Look how cute. Oh my God, it's so cute. This is actually a really good photo as well. Interesting. Delayed gratification. तो आप इस mimetic desire के साइकिल को तोड़ कैसे सकते हो? पहला तरीका है अपने सोशल मीडिया कंजम्पशन को कम करने का, जो मैंने किया। Limit your social media consumption. I did. Oh, he deleted Instagram. Interesting. I deleted my Instagram as well. I deleted a lot of social media consumption. Deleted Instagram. Deleted Reddit. Cut back on my use of like Discord, cut back on my use on like on X, formerly Twitter. The only social media that I use is YouTube is my primary social media because I upload videos to it, right? And then occasionally I post like photos of my guinea pigs onto X. That's about it. Like I don't use anything else. जैसे मैंने अपने फोन से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया, मैं बस लैपटॉप पर यूज करता हूँ। लैपटॉप पर यूआई इतना बेकार है कि आप 5 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करोगे, इसलिए महीनों से ना मैंने कोई स्टोरी डाली ना कोई पोस्ट, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ यार कई मेरी डिजायर्स इंस्टाग्राम से शेप हो गई। These companies are like वैलिडेशन के लिए। जैसे मुझे याद है कि they're brainwashing people at this point, right? तो अपने मूड को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये पोस्ट डाला था ताकि कुछ लाइक्स मिल जाए और मेरी Interesting. So that I could get some likes and increase my social validation. I don't think I posted a photo of myself. You know what? Let's do that. Let's post a photo of myself. I'll take a photo
and I don't really have very good lighting in here. I'll post it, and then when I'm editing this video, I'll take a screenshot of that post and put it there. How about this? I'll post it on Twitter, and I'll post it on one of my YouTube accounts, and we'll see. So let's get this going. Again, not very good lighting in here. Let's do put on my self illumination, or I can put on nightlight. Let's see. Let's do a night shot. Okay. Let's do a selfie illumination. Interesting. We know how to do that in portrait mode as well. Why not? Wow, I look terrible in these photos. The lighting is so bad. The lighting is so bad. Oh my God. Oh. Let's try it from that side. Okay. How do these photos look? They look okay. They look shit. I gotta get more lighting, and then I'll take the photo in under more lighting, and I'll post something. I just I have these really dim lights on right now, just so it's like super hot in here. I'll get to it. We'll see. सोशल वैलिडेशन बढ़ जाए, पर ये कितना खोखला तरीका है जीने का, इसलिए इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका अपने आप को क्वेश्चन करने का कि जो आप खरीदने जा रहे हो वो एक्चुअली आपकी डिजायर है या फिर नहीं। अपनी किताब में बर्जेस ने 2 डिजायर्स के बारे में बात करी, थिक और थिन। थिक डिजायर्स होती है जो डीप और मीनिंगफुल डिजायर्स हमारी जिंदगी को अपना एक पर्पस मिलता है। My thick desires, I want to be able to take care of my family. That is my biggest desire. I want to be in a state in my life where I'm actually able to take care of my family. And I suffer from untold amounts of depression and self-hatred because I am not at that stage in my life, and I don't see any avenue to get to that stage in my life. जैसे अगर कोई आईफोन 16 खरीदना चाहता है क्योंकि उनको एडवांस फोटोग्राफी का पैशन है। Oh, advanced photography. So there's a thick desire, so they get iPhone for advanced photography. But if you're going for advanced photography, you'd be better off getting like a DSLR camera or something, like an actual standalone camera. और ना कि सोशल वैलिडेशन से। जबकि थिन डिजायर हुई जब आप खरीदना चाहते हो mirror selfies with the washed out colors. मिरर सेल्फीज के। अब अगेन थिन डिजायर पर पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी कई कपड़े खरीदता हूँ, मैं भी सनग्लासेस में खर्च करता हूँ, जूते खरीदता हूँ, फोन लेता हूँ। प्रॉब्लम तब आती है जब वो डिजायर थिन है पर आप उसको थिक डिजायर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो 80,000 रुपए खर्च कर रहे हो जबकि सैलरी 30,000 रुपए है। Interesting. I feel like the video focused a lot on iPhone versus Android culture. But I guess it did talk about why a lot of people think iPhones are better and are more of a social symbol to show off with. I feel like I learned more about myself in this video than I did about like the Gen Z of India. I'm interested to see what a lot of people in the comments have to say. People seem to be missing the point of the video. It's not about iPhone or Android. It's about financial prudence versus opulence. Yeah. Thank you, Mom and Dad, for not raising me like this. And thank you, Brian, for common sense. Oh, Brian. For common sense, logic, and critical thinking. Edit, this has never happened. Glad to know a lot of us resonate with the same thought. Thank you all. Oh, because he has 14K likes. Before, people have fun. Now, people make sure that other people know they're having fun. I'm a founder of 2 startups, employed almost 37 people in both of the companies, bootstrapped. I use a Poco phone with 7K purchased in BBD 2020. Half of my employees have iPhones purchased on EMI on the basis of salary that I pay them. It's such a prestige for these guys about iPhone. I've never used one. One of my primary reasons for the Tata Nano's failure in India was that consumers often prioritize status over practicality. I recall a specific individual in my area who purchased a Nano. Unfortunately, he faced ridicule from others simply because he chose a cheap car. What? This reflects how societal perception can heavily influence consumer behavior and preferences. That's crazy.
I'm 26, living on rent away from home each month. I send my parents 20K, have a phone worth 13K, which I bought 2 years back. I don't have any EMI or loan in my name. Manage my expenses on my own. I take public transportation to commute. I have 4 meals a day, healthy ones. Go to gym 5 times a week. Own a Lenovo laptop worth 80. Lenovo laptops are fantastic. If you want like a good base standard like line Lenovo, get a good like Lenovo. Which I bought in 2017. It still works seamlessly. Have been planning to buy a Scooty to ease my commute for the last 3 months, but dropping the idea as it will eat a chunk of my savings. Currently, I have around 4 lakh of savings and portfolio of 80K. I'm happy with my lifestyle, my manner, expenses, and rent and food. I feel so blessed. I am Generation Z by age, but not by mind. Thank God. Never asked anything from my parents' expenses, but I bought my dream stuff. Invested after I started earning. Also gave the money to my parents using 10K worth of a phone. I'm proud of it. I work in a hotel. I've seen so many rich people like government officers, scientists, lecturers, artists, mostly 30, 40, 50 plus, using very basic cell phones and gadgets. And some even don't use anything. Being a public figure and socially active, learned a lot from it. It's all about your character and confidence you carry. Yeah, exactly. I agree with 100% with that. Thank you so much, brother, for raising this madness. India is the highest consumer of iPhone, wasting 10 billion USD per year, and it's moving towards highly capitalist societal, making gap even more wide in quality by these types of... God, that was hard reading that comment. That poor man, God bless her. Indians should understand that they should buy a phone according to their needs, not to flaunt and maintain social status. Exactly. This generation perfectly fits with the slogan, Adani, Athani, Aru Kacharapaya. Did I say that right? Probably not. What does that mean? Proper Jindu generation? Can-do generation? My dad, who is a very big contractor in Mumbai, operates everything from Pune from his two 15K phones and says it does all the work. We own around 9 cars, one of them being a Mercedes. When we hang out together, he is always teaching me how to not show off to other people. He has a very strict money spending rules on me. I'm grateful to have him. I feel so lucky and privileged to be in a tier where people around me don't think about associating status with such normalized commodities that we use on a daily basis. Gotta thank my family to give me this kind of lifestyle where our thinking starts from the point where the thinking and ambitions are of over 95% of Indian population ends. Yeah, that's the thing. This is like, it's a normal commodity. Like it's not like it's, like I said before, it's not like it's an exclusive thing, right? I am a proud Android user. I'm 26 and have never used an iPhone in my life, although I can afford it in my 1 month's salary without EMI. Okay, so I have used both Android and iPhone. From my experience, they're basically the same. All thanks to my upbringing, peer groups. Oh, what is this? Bass is not available on your iPhone? Okay. To be honest, I hate iPhone. Sony camera is used in iPhone. Hey, look at that. I just said it. I looked at it in the video as well. I have a Pixel 6 Pro. Not going to switch for the next 2 years. When it comes to camera quality, it's better than the iPhone 16 by leaps and bounds. My phone is more expensive than the iPhone 16. Bought from my own salary 1 year back. Have 6-digit salary PM. My phone is Android. Never buying iPhone shit. Okay. After maturity, using 10K Walla phone, Indians and their logic and buying iPhone unbelievable. Me using 13K phone. Why do these people know the price of their phone? That's random. Samsung 23 and Samsung 24. I'm assuming that's 23 as 24 is. When I passed 12th with first division, my mother gifted me a Samsung M10. I'm still using it. I don't ask for things which will hamper my mother's expenses. Good on him. Very important video. Thanks for making it. Is very important to realize. Those who ride the rickshaw are also roaming around with iPhone 15. You have done an incredible job on analyzing the people's psychology and their situation. Good luck. Yeah,
it feels like, it really does feel like, I don't know. I didn't realize that there was such a big, it feels like almost like if you don't have an iPhone, you're stigmatized and you're ousted from the group. That seems so odd. That seems incredibly like, what's the word? Shallow? God. I can't even think of the word that I want to say. What is the word I want to say? I don't know. I can't think of it. I don't know. It just seems so odd. It's so odd. I don't know. I think watching this video just reinforced my own personal beliefs on not being a consumeristic, celebrity worshiping individual, and I can think and, do things on my own without having to worry about what other people are doing or wearing or using. So yeah, okay. Again, link to the video is going to be in the description down below. I'm going to go take that photo and post it on Twitter, I guess, and I don't know. We'll see what happens. I'll talk to you all later, yeah? Take care, goodbye.